हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितिका। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाइप ड्राइव कैसे यूज़ करते हैं, पाइप ड्राइव्स के क्या बेनिफिट हैं और पाइप ड्राइव्स किस तरह से आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सकता है टू गेट मोर रेवेन्यू। तो दिस इज़ द डैशबोर्ड। दिस इज़ हाउ पाइप ड्राइव dashboard looks like. But before that, we're gonna know what pipe drive is. तो पाइप ड्राइव एक ऐसा सीआरएम है जो कि मेनली सेल्स पर्सन्स के लिए डिजाइन करा गया है सो दैट दे कैन इजीली सी द लीड्स, द डील्स, ऑल द पाइपलाइंस, एंड जिससे कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लीड्स को ढूंढने या डील्स को देखने में ना वेस्ट करें एंड दे कैन इजीली क्रिएट लीड्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गो एंड सी। यहाँ पे दिस इज द डैशबोर्ड। जब आप फ्री लॉग इन करोगे पाइप ड्राइव पे जाके, देन यू कैन सी दिस डैशबोर्ड यू विल बी गेटिंग। यहाँ पे ऑन लेफ्ट साइड यू कैन सी डिफरेंट कंटेंट्स like leads 1, deals 2, projects, campaigns, sales inbox, activities, contacts, insights, products, marketplace, and many more. Let's start with deals. Deals पे click करते हैं. Let's click on deals. And here you can see a dashboard. Leads में क्या क्या options हैं like live chat, chatbot, web forms, prospector, web visitors, messaging. Let's see कि अगर हमें कोई लीड क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे. This is the dashboard. Just click on the plus lead button. After clicking the plus lead button, it will ask you to put on some details. Details put करेंगे. Let me put something. Zara. Organization name. Okay. What happened? Organization name could be anything. I will put pipe drive. Then it's a pipe drive lead. Then you have to put the value. Value could be anything. और अगर कोई भी ऐसा field है which you don't want to fill और आपको लग रहा है कि this is not required for you, you can always just ignore it, or you can also customize it. कुछ भी आप customize कर सकते हो. You can just delete this, you can delete this, or you can add something. Then it will ask you for labels. You can just put hot, warm, or cold. Uh, Let me see, I can put hot. And then it will ask you for expected close date. Expected close date, जो आपकी due date है to work on this lead, or like anything to close on this lead. I'll put 16. Let's ignore other fields and let's save it. And here you can see the lead which I just created. If you want to do anything with this lead, you can just convert to deal. If you want to directly convert it to the deal, you can just click here. यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो. और अगर इस लीड को आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्टली टू द डील, जस्ट क्लिक ऑन हियर और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डील. और अभी आप अपने डील का कुछ भी पुट ऑन कर सकते हो यहाँ पे, लाइक द वैल्यू, पाइपलाइन की स्टेज क्या है, कांटेक्ट मोड. अगर इस लीड पे कांटेक्ट करा जा चुका है, इट मींस ऑलरेडी कॉल करी जा चुकी है, और मे बी एनी टेक्स्ट मैसेज और ईमेल, यू कैन जस्ट पुट इट हियर. अगर उस लीड के साथ आप ऑलरेडी डेमो स्केड्यूल कर चुके हो, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन हियर. और if any proposal already proposal has been made, or anything has been done, then you need to click on here, and this is the last, which means negotiation started. You can always add labels, and then the owner will be you.
यहाँ पे phone number, then email, and then you click on save. This is all about leads. You can always customize everything. कुछ भी अगर आपको इसमें customize करना है, like these are the fields you can see it right here, right? Now you don't want to see the lead created. You can always just go on there, remove this, just click settings, and okay, I don't want to see the owner. Owner को untick करेंगे, and then you can click on save. See, the owner is not mentioned here. And again, if you want to add it, just go there. You can owner के लिए search करेंगे, click here, and then save it. You can see this column is back. This is all about leads. You can always create the leads from here. This is all about leads. I hope that works for you. Thank you.